Hello students, welcome to my channel. So in today's lecture, we are going to start a new topic which is called aneurysm from a chapter blood vessel. So stay with me till the end. Let's start our today's topic. So what is aneurysm? An aneurysm is a localized abnormal dilation of a blood vessel or the heart that may be congenital or acquired. Basically, an aneurysm is a localized abnormal dilation. Okay, first, first thing which we have to remember is it is a localized. Number second is it is abnormal, and number third is it is dilation. Okay, it is not a diffuse dilation; it is a localized abnormal dilation of a blood vessel or the heart that may be congenital or acquired. When an aneurysm involves an attenuated but an intact arterial wall or thin ventricular wall of the heart, it is called a true aneurysm. So basically, there are two types of aneurysm, a true aneurysm and a false aneurysm. When an aneurysm, when a dilation involves an attenuated means weak, but the intact arterial wall or thin ventricular wall of the heart, it is called a true aneurysm. So ऐसा एन्यूरिज्म जो कि वीक वेसल के अंदर हो या थिन वेंट्रिकुलर वॉल के अंदर हो वेंट्रिकल्स जो हमारा हार्ट होता है द हार्ट हैज four chambers, two atria and two ventricles. So when an aneurysm involves a weak intact arterial wall or a thin ventricular wall of the heart, it is called a true aneurysm. Okay. For example, atherosclerotic, syphilitic, and congenital vascular aneurysm, as well as ventricular aneurysm that follow transmural MI, are of this type. So the examples of true aneurysm are atherosclerotic, syphilitic, congenital vascular aneurysm, and the ventricular aneurysm that follow post MI. Okay, these are all the examples of true aneurysm. In contrast, a false aneurysm, also called a pseudoaneurysm, is a defect in the vascular wall leading to an extravascular hematoma that freely communicates with the intravascular space, pulsating hematoma. So, the point which is important here and which is very worth to remember is the difference between a true and a false aneurysm. अगर ऐसी वेसल की या हार्ट के वॉल की डायलेशन हो रही है और वो डायलेशन इंटैक्ट वॉल के अंदर हो रही है, इंटैक्ट वेसल की वॉल इंटैक्ट है और वेंट्रिकल की जो वॉल है वो भी इंटैक्ट है, अगर उसके अंदर एन्यूरिज्म हो रहा है दैट इज ट्रू एन्यूरिज्म. अगर एन्यूरिज्म ऐसे वेसल के अंदर हो रहा है या ऐसे वेंट्रिकल की वॉल के अंदर हो रहा है जो कि उस वेंट्रिकल की वॉल के अंदर या वेसल की वॉल के अंदर डिफेक्ट है, when there is a defect in the vascular wall leading to an extravascular hematoma, leading to the collection of blood outside the vessel that freely communicates with the intravascular space, और वो जो blood collect हो रहा है vessel के बाहर वो freely communicate कर रहा है vessel की intravascular space के साथ, उसको हम बोलते हैं false aneurysm. ठीक है. Examples of the false aneurysm are ventricular rupture after MI, that is contained by a pericardial adhesion or a leak at the sutured junction of the vascular graft with the natural artery. So बहुत important है इस चीज़ को रिमेंबर करना कि ट्रू एनेरिज्म की एग्जाम्पल्स क्या हैं और फॉल्स एनेरिज्म की एग्जाम्पल्स क्या है. यहाँ मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो फॉल्स एनेरिज्म होता है, कोई भी वेसल वॉल या हार्ट की जो वॉल है, वेंट्रिकल की जो वॉल है, अगर उस वॉल के अंदर डिफेक्ट है मतलब वो वॉल रप्चर है और उस वॉल के रप्चर होने की वजह से जो ब्लड जो है उस स्पेस से बाहर जा रहा है और बाहर जाके कलेक्ट हो रहा है, तो उसको हम फॉल्स एनेरिज्म बोल रहे हैं. और ऑब्वियस सी बात है, जब वो रप्चर हुआ हुआ है वॉल और उस रप्चर्ड वॉल से ब्लड बाहर जाएगा और कलेक्ट होगा बाहर जाके, देन दैट ब्लड विल ऑब्वियसली कम्युनिकेट विद द इंट्रावेस्कुलर स्पेस. ठीक है, तो वो कम्युनिकेट करेगा. ये फॉल्स एनेरिज्म हो गया. एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को एमआई हुआ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, और जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो उनमें एक कॉम्प्लिकेशन आता है वेंट्रिकुलर वॉल रप्चर. ठीक है, जिस तरह माइट्रल वेल्व का रप्चर हो जाता है,
फ्री वॉल रप्चर एक कॉम्प्लिकेशन होती है पोस्ट एम आई। फॉर एग्जाम्पल उसी को हम वेंट्रिकुलर रप्चर बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब वो वेंट्रिकल की वॉल रप्चर करेगी एम आई के बाद, उस रप्चर्ड वॉल की वजह से ब्लड जो होगा, जो वेंट्रिकल्स के अंदर होगा, वो बाहर जाएगा और बाहर जाके कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको हम बोल रहे हैं फॉल्स एनेरिज्म। एग्जाम्पल मैं रिपीट कर देती हूँ, एग्जाम्पल्स इंक्लूड अ वेंट्रिकुलर रप्चर आफ्टर एमआई दैट इज कंटेन्ड बाय अ पेरिकार्डियल एडहेशन, और सेकंड एग्जाम्पल क्या है इसकी, अ लीक एट द सुचर्ड जंक्शन ऑफ अ वेस्कुलर ग्राफ्ट विद अ नेचुरल आर्टरी। हमने एक हमने नेचुरल आर्टरी के साथ एक हमने वेस्कुलर ग्राफ्ट लगाया है, एक मतलब हमने एक ग्राफ्ट को लगाया है किसके साथ, नेचुरल आर्टरी के साथ। और वो जो नेचुरल आर्टरी और ग्राफ्ट का जो जंक्शन होगा, अगर वो लीक हो जाए और वहां से ब्लड बाहर की तरफ कलेक्ट हो जाए, तो ये भी एक एग्जाम्पल है फॉल्स एन्यूरिज्म की, ठीक है। आई होप दिस हैज क्लियर अ लॉट ऑफ योर concepts. Okay, let's move forward. An arterial dissection arises when blood enters a defect in the arterial wall and tunnels between its layers. So this arterial dissection is another topic which we will cover in the upcoming lectures, ठीक है। So for for now मैं आपको इतना समझा देती हूँ कि एनेरिज्म और डायसेक्शन में फर्क है। एनेरिज्म क्या है, एक लोकलाइज्ड एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल है और द हार्ट, जिसके अंदर ब्लड कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। डायसेक्शन क्या होता है, जो हमारे पे वेसल की वॉल्स होती हैं, हमें पता है कि देयर आर थ्री वॉल्स ऑफ द देयर आर थ्री layers of the vessel wall. First is the intima, second is media and third is adventitia, ठीक है। अगर इंटीमा के अंदर डिफेक्ट हो, इंटीमा रप्चर हो जाए, और वो इंटीमा जब रप्चर होगा तो जो ब्लड होगा वेसल वॉल के, वेसल की जो स्पेस के अंदर, इंट्रावेस्कुलर स्पेस के अंदर जो ब्लड होगा, वो जाएगा किससे, इंटीमा से पास होता है, वो मीडिया के अंदर जाके कलेक्ट हो जाए, तो उसको हम डायसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। There is a major difference between aneurysm and dissection, ठीक है। So what is dissection? An arterial dissection arises when blood enters a defect in the arterial wall. आर्टीरियल वॉल के ना डिफेक्ट हुआ और ब्लड एंटर करे एंड टनल्स बिटवीन इट्स लेयर्स, और उसकी लेयर्स के बीच में टनल बना ले, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डायसेक्शन बोलेंगे। आई विल शो यू द डायग्राम्स विच विल फर्दर क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। Now, dissections are often but not always aneurysmal. Both true and false aneurysms, as well as dissections, can rupture, often with catastrophic consequences. So, ऐसा भी हो सकता है, there are possibilities that aneurysm can follow the dissection, ठीक है। Aneurysm के बाद dissection हो जाए, but this is not always the case, okay। ऐसा भी हो सकता है कि डायसेक्शन खुद ही अराइज हो जाए, बट एनेरिज्म के बाद भी डायसेक्शन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ फर्दर इन्होंने बताया कि बोथ ट्रू एंड फॉल्स एनेरिज्म एज वेल एज डायसेक्शंस कैन रप्चर विद ऑफन विद कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस। दैट मीन्स कि फॉल्स और ट्रू एनेरिज्म और डायसेक्शंस रप्चर कर सकते हैं, और उन रप्चर डायसेक्शंस के अंदर भी रप्चर हो सकता है, ठीक है, और उसकी बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बहुत डेंजरस रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है। Now, moving forward, descriptively, aneurysms are classified by macroscopic shape and size. Figure 11.18 that is explaining this, a saccular aneurysm and a fusiform aneurysm. दो तरह के एनेरिज्म है, ट्रू एनेरिज्म की दो टाइप्स हैं, एक सेक्युलर एनेरिज्म है, एक फ्यूसिफॉर्म एनेरिज्म है। What is secular aneurysm? Secular aneurysms are spherical outpouchings involving only a portion of the vessel wall. They vary from 5 to 20 centimeter in diameter and often contain thrombus. So let me show you the diagram. So this is the normal vessel. This is the intravascular space from which the blood is passing, and these are the layers of the vessel wall. Okay. Now here they are showing the two types of true aneurysm. First type of true aneurysm is the saccular aneurysm, and second is the fusiform aneurysm. So what is saccular aneurysm? Saccular aneurysm is a localized dilation. इसके अंदर उन्होंने क्या बताया? Are spherical outpouchings involving only a portion of the vessel wall. ठीक है, these are the spherical outpouchings that involving only a portion, not the whole vessel wall, only a portion of the vessel wall. ठीक है. Now the second type of aneurysm, true aneurysm, is a fusiform aneurysm. What are fusiform aneurysm? Fusiform aneurysms are diffuse circumferential dilations of a long vascular segment. So see here, this is a fusiform aneurysm. This is a diffuse dilation.
You can see a major difference between a saccular and true fusiform aneurysm. It is a spherical outpouching, and this is a look. This is a diffuse circumferential dilation. Diffuse circumferential dilation of a long vascular segment that vary in diameter up to 20 centimeter and in length, and can involve extensive portions of the aortic arch, abdominal aorta, or even the iliacs. These types are not specific for any disease or clinical manifestations. ऐसा नहीं है कि एथ्रोस्क्लेरोसिस के अंदर सेक्युलर एनेरिज्म होगा या फ्यूसीफॉर्म के अंदर सेक्युलर एनेरिज्म, फ्यूसीफॉर्म जो है वो सिफिलिटिक एनेरिज्म के अंदर होगा. सो यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि दीज टाइप्स आर नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी डिजीज. ठीक है, सेक्युलर किसी के अंदर भी हो सकता है और फ्यूसीफॉर्म भी किसी के अंदर हो सकता है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ एनेरिज्म. ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ये नॉर्मल वेसल है, ये सेक्युलर एनेरिज्म है, ये फ्यूसीफॉर्म एनेरिज्म है. और ये दोनों टाइप्स जो थी सेक्युलर फ्यूसीफॉर्म एनेरिज्म, दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रू एनेरिज्म. नाउ दिस इज द फॉल्स एनेरिज्म. अब देखिए फॉल्स एनेरिज्म क्या है. ये नॉर्मल वेसल है. नाउ यू कैन सी अ डिफेक्ट इन द वेसल वॉल. दिस इज द रप्चर ऑफ द वेसल वॉल. वेसल वॉल रप्चर हो गई और ब्लड जो हुआ, एक्स्ट्राविजेशन ऑफ द ब्लड हुआ. दैट मीन्स ब्लड इज मूविंग आउट ऑफ द वेसल, intravascular space through the vessel wall into the extravascular space. एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस, यहाँ पे वेसल वॉल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, और इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये कलेक्ट हो गया. वेसल के बाहर बट कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये कलेक्ट हुआ है ब्लड, इसको हेमाटोमा बोल रहे हैं. दैट इज फॉल्स एनेरिज्म. आई थिंक कि आपको ये बहुत क्लियर कर रही होंगी चीज़ें कि ट्रू एनेरिज्म क्या है और फॉल्स एनेरिज्म क्या है. नाउ व्हाट इज डाइसेक्शन. डाइसेक्शन सिंपली देखो यहाँ पर क्या था, एनेरिज्म के अंदर, फॉल्स एनेरिज्म के अंदर फुल रप्चर हुआ है, फुल रप्चर हुआ है और ब्लड एक्स्ट्राविजेशन हो रही है एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस के अंदर. ठीक है, लेकिन डाइसेक्शन के अंदर क्या है कि सिर्फ इंटीमा, इंटीमा ऑफ द वेसल वॉल जो है वो रप्चर हुआ है और ब्लड जाके लेयर्स ऑफ द वेसल वॉल की जो लेयर्स है उसके अंदर जाके कलेक्ट हो गया. टेयर, only a tear in the intima. This is not a true rupture. This is a tear in the intima, so the extravasation of blood occurs and blood collects it between the layers of the vessel wall. Okay, so moving forward, what is the pathogenesis of aneurysm? To maintain their structural and functional integrity, arterial walls constantly remodel by synthesizing, degrading, and repairing damage to their extracellular matrix constituents. Aneurysm can occur when the structure or function of the connective tissue within the vessel wall is compromised. ठीक है? Although we cite here examples of inherited defects in connective tissues, weakening of the vessel walls is important in the more common sporadic forms of aneurysm as well. So here, to simplify it, here they are talking about what are certain disorders in which we can see aneurysm. So there are connective tissue disorders that can be acquired or congenital in which we can see an aneurysm. So here they are talking about many syndromes. For example, Marfan syndrome. Number second is the Lewis-Dice syndrome. Number third is the Ehlers-Danlos syndrome. So these are the syndromes in which we can see an aneurysm. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन सिंड्रोम्स के अंदर सिर्फ एन्यूरिज्म होगा, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होंगे अलोंग विद एन्यूरिज्म. ओके, लेट्स टॉक अबाउट one of the syndrome which is very important called Marfan syndrome. The intrinsic quality of the vascular wall connective tissue is poor. In Marfan syndrome, for example, so basically Marfan syndrome के अंदर होगा क्या? A defective synthesis of the scaffolding protein fibrillin leads to the aberrant transforming growth factor beta activity and weakening of the elastic tissue in the aorta. This may result in progressive dilation. So basically, Marfan syndrome is a genetic disorder in which there is a defect in the fibrillin gene. Okay, so due to a defect in the fibrillin gene, there is a defective synthesis of fibrillin protein that lead to the defective activity of transforming growth factor beta. Okay, and due to this reason, there is a weakening of the elastic tissue in the aorta, and this result in the progressive dilation. In simple words, Marfan syndrome में होता क्या है?
इस मार्फन सिंड्रोम इज अ इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर हमारे पास जो फिब्रिलिन प्रोटीन होती है उसका डिफेक्ट होता है। वो फिब्रिलिन जीन का डिफेक्ट होता है जो कि कोड करती है फिब्रिलिन प्रोटीन को। जब जीन का डिफेक्ट होगा तो देयर विल बी अ डिफेक्टिव फिब्रिलिन प्रोटीन। जो डिफेक्टिव फिब्रिलिन प्रोटीन होगी उसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा की एक्टिविटी होगी वो एबरेंट होगी, वो इम्प्रॉपर होगी, और उसकी वजह से जो इलास्टिक टिश्यू होगा एओटा का, हमें पता है कि इंटीमा मीडिया एडवेंटिशिया जो होता है उसके ना एडवेंटिशिया के ना इलास्टिक टिश्यू होता है, तो वीकनिंग ऑफ द इलास्टिक टिश्यू ऑफ द एओटा होगा। और जिसकी वजह से जब इलास्टिक टिश्यू वीकन if there is a weakening of the elastic tissue of the aorta, this lead to the dilation of the vessel wall and forms, and as a result it forms an aneurysm. Okay, let me show you an important diagram of a Marfan syndrome that will help you to remember this. So here is the diagram of the Marfan syndrome. Okay. So, so what is Marfan syndrome? It is an inherited disorder that affects the connective tissues in the body. So basically Marfan syndrome है, okay? इस syndrome के अंदर क्या होगा कि इस in simple words there is a it is an inherited disorder in which there is a defect in the connective tissue of the body, ठीक है? बहुत सारे बॉडी के जो कनेक्टिव टिश्यूज होंगे उनके ना डिफेक्ट होगा। सो उसके साथ साथ जब बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज का ना डिफेक्ट होगा सो ऑब्वियस सी बात है कि जो वेसल वॉल है उसके अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू है, उसका भी डिफेक्ट होगा। जब उस कनेक्टिव टिश्यू इलास्टिक टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यूज का डिफेक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वीकनिंग ऑफ द वेसल वॉल होगी, और क्या होगा, लोकलाइज्ड डायलेशन ऑफ द वेसल वॉल होगी, दैट लीड टू एन्यूरिज्म. So, Marfan syndrome is an inherited disorder that affects the connective tissue in the body. Marfan syndrome is caused by the protein in the connective tissues. ठीक है? So यहाँ पे eye problems हो रही हैं, long arms and fingers हैं, abnormal chest है, and lung problems हैं, and heart problems हैं, short torso है, signs and symptoms disproportionately long legs, arms, toes and fingers, extremely tall and slender build है, long narrow face है, high arched neck and crowded teeth है, intended and protruding sternum है, okay. Dislocated lens of the eyes, very important symptom of the Marfan syndrome is dislocated lens of the eyes. High pressure in the eyes, cystic changes in the lungs, flexible joints, flat feet, curved spine, abnormal heart sounds. Okay, so these are all the signs and symptoms of Marfan syndrome, along with the aneurysm which we see in the Marfan syndrome. Okay. Moving forward, another syndrome is Lewis-Diaz syndrome, is another cause of aneurysm. In this disorder, mutations in the transformer growth factor beta receptors lead to defective synthesis of elastin and collagen 1 and 3. So, Marfan syndrome, there was a defect in the fibrillin gene, okay, but in Lewis Diaz syndrome there is a mutation in the transforming growth factor receptor beta receptor का defect है जहाँ पे आके transforming growth factor beta bind करता है, and that lead to defective synthesis of elastin and collagen 1 and 3. Okay, जब यहाँ पर भी हमारे पास elastin and collagen, these are both the connective tissues, and when these connective tissues are defective, that lead to an aneurysm. Okay, aneurysm in such individuals can rupture fairly easily, even at small size, and are thus considered to follow an aggressive course. So, in we see an aneurysm both in the Marfan syndrome and in Lewis Diaz syndrome. But in Lewis Diaz syndrome, the aneurysm are very easily ruptured, and they follow an aggressive course. So, which aneurysm is a dangerous? Aneurysm of Marfan syndrome or the Lewis Diaz syndrome? Aneurysm of a Lewis Diaz syndrome is much more dangerous than the aneurysm of a Marfan syndrome because it can fairly easily rupture. Okay. Weak vessel walls due to defective type 3 collagen synthesis are also a hallmark of vascular forms of Ehlers-Danlos syndrome. So there it is a third syndrome in which we see an aneurysm which is called Ehlers-Danlos syndrome. In this syndrome there is a defect in the collagen type 3, defective synthesis of collagen type 3.
And an altered collagen cross-linking associated with vitamin C deficiency scurvy is an example of nutritional basis of aneurysm formation that is thankfully rare these days. So basically, there are four syndromes in which we see in which there is in which there is the connective tissue, the intrinsic quality of the connective tissue is poor. Number one is Marfan syndrome. Number second is Lewis Dice syndrome. Number third is Ehlers-Danlos syndrome. And number fourth is scurvy, in which there is a deficiency of vitamin C. ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, प्रॉपर ऑल्टर्ड कोलेजन क्रॉस लिंकिंग दैट लीड टू एन एनेरिज्म फॉर्मेशन. And this scurvy, vitamin C deficiency, is very rare these days because vitamin C deficiency is very rare these days. Okay. Now moving forward, हम लोगों ने ऊपर जो पैराग्राफ पढ़ा है, in the top paragraph we have seen that there is a the intrinsic quality of the vascular wall connective tissue is poor. Okay. In the above paragraph, in this paragraph we have seen that the intrinsic quality of the vascular wall connective tissue is poor. But in the coming paragraph, now we will see the balance of the collagen degradation and synthesis is altered. The balance is altered. The balance between the collagen synthesis and collagen degradation is altered. That lead to an aneurysm formation. Is altered by inflammation and associated proteases, in particular increased matrix metalloproteinase (MMP) expression, especially by macrophages in atherosclerotic plaque or in vasculitis, likely contributes to aneurysm development. These enzymes have the capacity to degrade virtually all components of extracellular matrix in the arterial wall: collagens, elastin, proteoglycans, laminin, and fibronectin. Decreased expression of tissue inhibitors of metalloproteinase can also contribute to extracellular matrix degradation. In simple words, the matrix metalloproteinase is responsible for the degradation of the connective tissue. Example: collagen, elastin, proteoglycans, and laminin and fibronectin. Okay. So when there is an increased expression of matrix metalloproteinase, okay, and decreased expression of tissue inhibitors of metalloproteinase, it will contribute to the degradation of connective tissue. ओके. सिंपल वर्ड्स में ये है कि अगर मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेज का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाए, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, और उसके कंपैरिजन में जो टिश्यू इनहिबिटर्स ऑफ मेटलोप्रोटीनेसेस है, जो इनहिबिट करते हैं मेटलोप्रोटीनेज को, वो कम हो, तो मेटलोप्रोटीनेज इनहिबिट नहीं होगा. दोनों केसेस में मेटलोप्रोटीनेज बढ़ेगा. अगर इंक्रीज एक्सप्रेशन हो रही है मेटलोप्रोटीनेज की और डिक्रीज एक्सप्रेशन हो रही है टिश्यू इनहिबिटर्स ऑफ मेटलोप्रोटीनेज, दैट लीड टू द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेज, and that will degrade the extracellular matrix in the arterial wall, for example collagen, elastin, proteoglycans, etc., etc. Okay. The risk of aneurysm formation in the setting of inflammatory lesions, example atherosclerotic, may be associated with matrix metalloproteinase, or tissue inhibitors of matrix metalloproteinase polymorphisms, or altered by the nature of the local inflammatory response. So the example in which there is increased expression of metalloproteinase and decreased expression of tissue inhibitors of matrix metalloproteinase is atherosclerosis. We can see this type of aneurysm in the settings of atherosclerosis. Okay. For example, there are two types of aortic aneurysms. First is the abdominal aortic aneurysm, and second is the thoracic aortic aneurysm, which we will discuss in the further lectures. Are associated with local production of cytokines interleukin 4, interleukin 10 that stimulate the release of elastolytic metalloproteinase from macrophages. Now, the third type is the third pathogenetic factor in the formation of an atherosclerotic aneurysm. The aneurysm is the vascular wall is weakened through the loss of smooth muscle cells or the synthesis of non-collagenous or non-elastic extracellular matrix. Ischemia of the inner media occurs when there is an atherosclerotic thickening of the intima, which increases the distance that oxygen and nutrients must diffuse. So basically,
We have already talked about atherosclerosis. In the atherosclerosis, there is a formation of an atherosclerotic plaque in the intima. Okay, so due to the formation of this atherosclerotic plaque, the distance between the intima, between the vessel wall lumen and the media is increased. When the distance between the media and the blood, which is present um, in the intravascular space, in the lumen of the vessel, this will be increased. So there will be decreased transport of oxygen and nutrients to the media that lead to the ischemia of the media, and due to the ischemia of the media that lead to an aneurysm formation. इन सिंपल वर्ड्स, अगर हमारे पास एथ्रोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है कि एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लैक बनता है इन द इंटीमा। उस एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लैक की वजह से उसके बनने की वजह से जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, और जो मीडिया है उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो देयर विल बी लेस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द मीडिया। जब मीडिया के पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कम पहुंचेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उस मीडिया का इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया होगा तो देयर विल बी more chances of the formation of athero more chances of formation of aneurysm. Okay, now systemic hypertension can also cause significant narrowing of the arterioles of the vasa vasorum in the aorta, which cause outer medial ischemia. और एक और एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दिए कि सिस्टमिक हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो वेसा वेसुरम होते हैं, वेसा वेसुरम आर दोस वेसल्स दैट सप्लाई द एडवेंटिशिया ऑफ द वेसल्स। दीज आर स्मॉल वेसल्स दैट सप्लाई द ब्लड टू द एडवेंटिशिया ऑफ द वेसल वॉल। सो उसके अंदर क्या होगा कि वेसा वेसुरम जो होती है उनकी नैरोइंग हो जाती है। जब नैरोइंग हो जाएगी वेसा वेसुरम की हाइपरटेंशन के अंदर, तो देयर विल बी लेस blood supply, less nutrient or oxygen supply to the adventitia and media, outer media. So there will be an ischemia of the outer media, and that will also contribute to the aneurysm formation. Medial ischemia may lead to degenerative changes of the aorta, whereby smooth muscle cell loss or change in synthetic phenotype leads to scarring and loss of elastic fibers, inadequate extracellular matrix synthesis, and production of increasing amounts of amorphous ground substance glycosaminoglycans. Histologically, these changes are collectively recognized as cystic medial degeneration. हम लोग जब histologically इसको देखेंगे microscopically, these lesions, these schematic changes in the media will be seen as a cystic medial degeneration, which can be seen in a variety of settings, including Marfan syndrome and scurvy. Now, another example is the tertiary syphilis is another rare cause of aortic aneurysms. The obliterative endarteritis characteristic of late-stage syphilis shows a predilection for small vessels, including those of the vasa vasorum of the thoracic aorta. This lead to schematic changes of aortic media. इसके अंदर भी यही होगा. In the late stages of tertiary syphilis, we see a changes in the vasa vasorum, obliterative endarteritis, inflammation of the vasa vasorum that lead to an aneurysm. So basically, in simple words, in the tertiary syphilis के अंदर क्या होगा? Tertiary syphilis के अंदर late stage of tertiary syphilis we see ऑब्लिटेटिव एंडार्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी किसकी, स्मॉल वेसल्स, फॉर एग्जाम्पल वेजा वेजुरम की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो देयर विल बी लेस ब्लड सप्लाई टू द आउटर मीडिया एंड एडवेंटिशिया ऑफ द वेसल वॉल दैट लीड टू एन एनेरिज्म फॉर्मेशन, ischemia of the media, and then aneurysm formation. Okay, this leads to ischemic injury of the aortic media and aneurysm dilation, which sometimes involves the aortic valve annulus, which can also involve the ascending aorta, means the aortic valve annulus. Okay. The two most important causes of aortic aneurysms are atherosclerosis and hypertension. These are the two most important causes of aortic aneurysm. So here I want to clear some concepts which are very important. That in the starting we have talked about that the aneurysms are localized abnormal dilation of the vessel wall, which can be congenital or acquired. Okay, so हमने congenital causes पढ़ लिए. We have talked about the Marfan syndrome, Lewis-Dice syndrome, Ehlers-Danlos syndrome, scurvy. These are all the congenital syndromes which lead to an aneurysm formation. Okay, but we have also talked about the acquired causes of aneurysm. For example, when
matrix metalloproteinase and the tissue inhibitors of metalloproteinase. When there is a disbalance between these two, we have talked about an atherosclerosis, we have talked about hypertension, we have talked about syphilis. ठीक है, तो यहाँ पर they are talking about an acquired causes of aneurysm. The two most important acquired causes of aortic aneurysms are atherosclerosis and hypertension, and we will talk about them in the further lectures. Okay, in very detail. Okay, so atherosclerosis is a great factor in abdominal aortic aneurysm. So basically जो कि एथ्रोस्क्लेरोसिस होता है वो कौन से एओर्टा का कौन सा पार्ट होता है जिसमें एनेरिज्म करवाता है. सो एथ्रोस्क्लेरोसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द abdominal aortic aneurysm. Aorta के parts है ना, ascending aorta, transverse aorta, descending aorta, which can be thoracic aorta, then abdominal aorta. So atherosclerosis is a great factor in the formation of abdominal aortic aneurysm. Okay, while hypertension is the most common etiology associated with ascending aortic aneurysm. Okay, so, atherosclerosis is a great factor in the formation of abdominal aortic aneurysm, and hypertension is a great factor, great etiological factor in the formation of in as is a great etiological factor associated with an atherosclerosis formation in the ascending aorta. Oh, sorry, an aneurysm formation in the not atherosclerosis, an aneurysm formation in the ascending aorta. Okay. Other factors that weaken vessel walls and lead to the aneurysms include trauma. Other factors that weaken vessel walls and lead to aneurysm include trauma. There are minor factors that contribute to aneurysm, for example, trauma, vasculitis, congenital defects, in example, fibromuscular dysplasia, and aneurysm, typically in the circle of Willis, and infections, example, mycotic aneurysms. Mycotic aneurysms can originate from embolization of the septic embolus, usually as a complication of infective endocarditis, as an extension of an adjacent suppurative process, or by circulating organisms directly infecting the arterial wall. So, guys, we will talk about abdominal aortic aneurysm and thoracic aortic aneurysm in very detail in upcoming lectures. Okay, so stay with me till the end. Do watch my previous videos and do watch the upcoming videos, that will help you a lot. And sorry if you did not understand any of the thing, because today I was fasting, and I hope you guys will understand. Thank you so much for watching this video and liking my content. Thank you.